Hello and welcome everyone. My name is Reshmi Mukherjee, as the channel name suggests, and here you are getting ICC IAC materials, literature as well as language. Uh, the written materials will be provided in slotskill.com. Okay, some practice papers and stuff, so you can follow that from there. Telegram channel, line-wise explanation of the paraphrase of the drama will also be provided there, as was provided for Merchant of Venice. Telegram channel is Slot Skill Board Prep. You can connect over here, and the link will be shared of the classes. You will not miss any. Do not forget to like, share, and subscribe if you benefit from the videos. And about online private class, because new session is starting, you can join from April. Okay, and those who are joining April to May, you will be admitted. After that, it closes. Those who are interested, this is your mail slotskill.contact@gmail.com. यहाँ पे contact कीजिए. You will be given the required details. Mention your class, state and number of desired classes when you are writing the mail. Okay, regarding the private classes. Now, class timings: Tuesday, Thursday, Saturday, and Sunday. These are the timings when you are going to get your videos. Okay, and last but not least, you also have a free offer, which is your question papers. If you are interested in sharing the question papers, you will get those explained in the live classes, grammar papers possibly. Clear pictures, send clear pictures of those, and send a PDF, not separate pictures, okay, to the same email ID that I have already given you, circle.contact@gmail.com. So, as I told you, as I have already given the syllabus and everything to you, today we are going to start with Macbeth, the first first scene of Macbeth. So we will come to it, and before we cannot just jump start, right? So we have to have an idea. See what is happening, who is Macbeth, what are all these characters, what are we actually going to learn. So as you can see, topic is Macbeth, and what we are going to do, we are going to read it line by line and understand ki what is the idea, who is this person, what is the main theme. Just like Merchant of Venice में आपका था ना कि Jews, Christians इस इन लोगों में problem, this was a tragic comedy. So what is this? Now, written material ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, लेकिन सुन लो आप जो भी मैं बोल रही हूँ. Everything is important. Okay, plot and purpose. Plot and purpose में, one moment, plot and purpose में what is the idea? प्लॉट मतलब जो हम पहले जब स्टोरी लिखते हैं, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम कुछ सोचते हैं कि कैसे इसको फ्रेम करेंगे. तो यहाँ पे कैसे फ्रेम हो रहा है, पहला जो एक्ट, पहला जो सीन है, इसका भी इम्पोर्टेंस है. आई ऑलवेज टेल यू नो, इफ यू आर राइटिंग अ स्टोरी, try to make it very interesting in the introductory lines itself, so that the people are interested in reading कि आप बाद में क्या लिख रहे हो, वो इंटरेस्टिंग. जैसे सोचो कि सीरीज देख रहे हो आप कोई, ठीक है, मूवी सीरीज कुछ देख रहे हो, तो उसका पहला वाला जो एपिसोड रहता है वो कभी कभी फ्री में मिलता है, कभी कभी बहुत इंटरेस्टिंग रहता है. क्यों? ताकि वो पूरा जो सीरीज है वो उसमें लोगों की इंटरेस्ट ड्रॉ कर पाए. तो ये जो सीन है, ओपनिंग सीन इन मैकबेथ, वो बहुत ही शॉर्ट सा है, आपने देखा होगा, मैं भी दिखाऊंगी यहाँ पे. तो ये एक हीद पे होता है. ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, दैट इज अ हीद. ओके, मतलब स्वम्पी मार्शी काइंड ऑफ लैंड, जहाँ पे बहुत ही मतलब कोई लोग नहीं आते, अच्छा सा लैंड नहीं है, कोई घूमने के लिए नहीं आएगा यहाँ पे. इट इज अ हीद, बैरन एंड डेजर्टेड, कोई नहीं रहता है यहाँ पे, एंड इट इज डार्क. फिर कभी कभी जब फ्लैशेस ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग हो रहा है, वो लाइटनिंग के हिसाब से थोड़ा थोड़ा हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि क्या है. तो यहाँ पे ये तीन विचेस, यहाँ पे पिक्चर दिखेगा आपको, ये तीन विचेस क्यों मीट कर रहे हैं, वो कुछ डिसाइड कर रहे हैं करने के लिए. तो वो क्या है? दे आर डिसाइडिंग द टाइम, द प्लेस एंड द पर्पस ऑफ देयर नेक्स्ट मीटिंग. वो नेक्स्ट कब मीट करेंगे, क्यों मीट करेंगे, किसको मीट करेंगे, ये सब डिसाइड करने के लिए ये वहां पे है. ठीक है. तो पर्पस इसका है कि वो मैकबेथ को मीट करेंगे, एंड नाउ ये इंटेंसिफाई होता है कि वो लोग जो बात करते हैं वो इम्पोर्टेंस, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो हम लोग जब टेक्स्ट पढ़ेंगे तब पता चलेगा. पर्पस तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, टू मीट मैकबेथ. नाउ वी विल मूव टू की थीम. यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पिक्चर यूज किया है मैंने, ये आप पहले देख लीजिए. की थीम मतलब ये इसका बैकग्राउंड क्या है.
ठीक है, किसका बेसिस पे, व्हाट इज द इंटरेस्ट, व्हाई आर दिस विचेस स्टैंडिंग हियर। इन्वर्शन ऑफ वैल्यूज, इन्वर्शन ऑफ वैल्यूज मतलब जैसे सी व्हाट इज द लाइन, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, मतलब जो भी अच्छी चीज है that will become negative and whatever is negative will become positive. That means it is changing. See that picture, just like we people cut cows or cut different animals for our, you know, entertainment, for our food. One day the opposite can happen. So what is this inversion of values? Satanism में, मतलब सेटन जो था मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट में, वहां पे एक जगह था जहाँ पे वो बोल रहा है कि इविल बी दाउ माई गुड, दैट मीन्स वॉट एवर इज इविल, जो भी खराब है वो मेरे लिए अच्छा है। मैं डेविल हूँ तो मेरे लिए अच्छा है कि जो भी अदर मतलब बुरा चीज हो रहा है इधर उधर वो मेरे लिए अच्छा है। Okay, so that is what the witches also say. So we can understand the negativity, impact of the negativity in the first act, first scene itself. So this is moral confusion. यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग confuse हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। Fair is foul and foul is fair, just opposite. What is not? They are saying that only. So maybe the main character Macbeth will also be confused because of the witch's influence. Okay, very important line that I have said. उसको confuse करेंगे witches. Okay, कि वैल्यूज, आपका जो वैल्यूज है कि ये करूं क्या नहीं करूं, ये जो वैल्यूज है ये हम लोग सोचते हैं ना कि ये करना नहीं चाहिए, यही आइडिया मैकबेथ का कंफ्यूज हो जाएगा आफ्टर मीटिंग द विचेस। इन्वर्शन ऑफ वैल्यूज हो गया आपका थीम। ओके, एंड दिस लाइन फेयर इज फाउल ये यहीं पे है फर्स्ट एक्ट फर्स्ट सीन पे, टू improve again to drag the interest of the readers. Next, Elizabethan belief. एलिजाबेथन बिलीफ में तीनों चीजें थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं। विचेस जो थे, विचेस वाला एक सिंबल है कि फर्स्ट एक्ट फर्स्ट सीन में विचेस है, सो सब नेगेटिविटी होगा इस प्ले में, ये कॉमेडी नहीं होगा, ये ट्रेजेडी होगा। ठीक है, नंबर वन। विचेस का मतलब तब लोगों ने विचेस को बहुत ही मतलब दे बिलीव्ड कि विचेस एग्जिस्ट करते हैं और दे आर इविल एंड यू नो दे आर अगली, दे कॉज अ लॉट ऑफ केओस, सिंबल ऑफ ऑल दैट। बैड वेदर ये एलिजाबेथन में ये शेक्सपियर का बहुत सारा जगह पे आप लोगों को मिलेगा। जूलियस सीजर, if you have studied you will get it there also. Whenever something bad is going to happen you know on earth, you will see that in nature also something bad is happening. That's why darkness, thunder and lightning, we are getting to see that when in act 1 scene 1 itself witches are meeting Macbeth. Okay, familiars of the witches. Now witches, they have some familiars मतलब it is was believed कि witches का जो spirits है that is inhabited in the bodies of animals. There are 3 witches. Every witch has an animal. किसी के पास कैट है, किसी के पास टोड है, जैसे बिलीव करते हैं कि उसका अगर टेल नहीं हुआ तो दोज आर विचेस एनिमल्स. सो दीज फेमिलियर्स आर आल्सो दोज इविल क्रीचर्स itself. Okay, now we will start with the main act. Act 1 scene 1, a desert place, मतलब this is a very lonely place. Thunder and lightning, enter 3 witches. So there is thunder and lightning and all. We, as I told you, darkness everywhere, and this is a heath. Okay, 3 witches enter. First witch is saying, when shall we 3 meet again? So I told you, no time, they're deciding on the time कि कब meet करेंगे, in thunder, lightning or in rain. Second witch, when the hurly burly is done, मतलब जब confusion सब सारे confusions खत्म हो जाएंगे. When the battles lost and won, again we are confused. Battles तो हम लोग कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, राइट, दोनों एक साथ कैसे होगा, है ना? लेकिन दिस हैज अ सिग्निफिकेंस. कभी कभी क्या होता है जब हम लोग डिसाइड करते हैं मन से कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तब हम लोग क्या मतलब सोचते हैं कि जीतेंगे, लेकिन जीतने के लिए क्या करते हैं, मे बी बैंक रॉबरी कर ले, तो हम सोच रहे हैं कि हम जीतेंगे, नहीं एक्चुअली वो क्या है, हार है, कॉन्शियस का हार है, बुरा काम करने के लिए जा रहा है. तो बोथ थिंग कैन हैपन टुगेदर. मे बी बैंक रॉबरी करके बहुत सारा पैसा एकजुट कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली वी लॉस्ट, राइट, क्योंकि वी हैव डन अ बैड थिंग. सो एट दोज टाइम्स बैटल्स लॉस्ट एंड वन. यहाँ पे सिंपल मीनिंग में ये पता चल रहा है कि विचेस को ना फोरसाइट है, उसको मतलब पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में बहुत सारा चीजें पता है. उसको ये भी पता है कि वॉर चल रहा है अभी,
ओके, फ्यूचर इवेंट्स के बारे में उन लोगों को पता है। एंड द नॉर्वेजियन किंग मैकबेथ, ये लोग जो वॉर पे है, ये लोग वॉर से वापस आएंगे, ये सब उसको पता है। तो दैट वी कम टू नो। थर्ड विच द बोल रहा है दैट विल बी एयर द सेट ऑफ सन, मतलब अच्छा तो फिर वो तो सनसेट से पहले ही हो जाएगा। वेयर इज द प्लेस, तो फिर कहाँ मीट करेंगे? अपॉन द हीथ, कहाँ मीट करेंगे? हीथ, हीथ मतलब स्वम्पी मार्शी लैंड, जहाँ पे मतलब लोग ज्यादातर नहीं आते हैं। थर्ड, देयर टू मीट विथ मैकबेथ, क्यों आएंगे वहां पे? हम लोग मीट करेंगे मैकबेथ से। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड, पहले ही सीन में, पहले ही एक्ट में किसी का नाम हम लोगों ने देखा है। दिस कैरेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, sorry, Ikram Grimalkin, this is a cat. Okay, this is the familiar, as I told you ki these are the, you can call them pets, you can call them familiars, it is better if you call them familiars. Okay, and second witch paddock, matlab toad is calling her, and on third witch says I'm coming, I'm coming. And it ends with a most interesting line, fair is foul and foul is fair, hover through the fog and fill the air. So this is very important, you can memorize it nicely. ये अभी तक मैंने लास्ट मतलब 10 years में ये नहीं भूल पाई मैं. This is a very interesting line, very nice line, and this is the theme of the whole Macbeth act. मतलब पूरा जो ड्रामा है उसका जिस्ट है ये, कि हम लोग ना कॉन्शियस हम लोगों का जो है उसमें आप देखोगे कि ट्रेजेडी, जो भी ट्रेजेडी मैकबेथ ने सॉरी शेक्सपियर ने लिखा है, वहां पे कोई इसका फ्लॉ रहता है, मतलब कैरेक्टर का कुछ फ्लॉ है। ऐसे ही नहीं कि भगवान ने चाहा तो इसका खराब हुआ, भगवान ने चाहा तो उसका अच्छा हुआ, ऐसा नहीं होता है। किसी के, सबके पास ना एक एक करके नेगेटिव क्वालिटी रहता है, इसके पास भी था मैकबेथ के पास, तो उसी की वजह से ये इसका डाउनफॉल हुआ। एंड हु वर रिस्पॉन्सिबल? These witches were responsible. Now you can say witches don't exist. Okay, then you can even see these witches as your bad conscience. Remember Lancelot was fighting against that bad conscience and good conscience. So वो जो bad conscience है वो भी तो devil ही है, तो वो हम लोग बोल सकते हैं कि वही witches था, मेरे ही मन में चल रहा था, तो वही I could not fight back against it and I fell prey to it. वही हुआ मैकबेथ के साथ भी। तो whether Macbeth is able to fight it or not, we will see throughout this act, throughout this drama Macbeth. Okay, so you can understand how interesting it is going to be. So next page में चलते हैं, थोड़ा सा और information बाकी है फिर। Role played by the witches. Role played by the witches. Number one, weather. Now weather plays a very important role, as I already told you. Bad weather means something bad is going to happen on earth. Time, now they come here to decide the time, and they play with time. Okay, the question of time is the key theme over here. When shall we meet again? All these are highlighting the time. Okay, Macbeth wants to know things before time, and that is the problem that he faces. That is the reason why he faces defeat. Knowledge. Okay, what is this about knowledge? They have knowledge of future events. I already told you that the war will happen, what will be the result of war, they have an idea of it. Prediction, same thing, knowledge and prediction. And they can also predict human behavior very well. They know कि human beings में वो एक चीज है ambition और over ambition, they can play with it. Okay? They can fall prey to all this. So they use it to confuse human beings, to deceive human beings. So confusion and deception. We see that when the battle's lost and won, every battle is lost and won sometime or the other, right? But this conscience, the human conscience, that can lose and win at the same time. So you cannot call this as a loss and that as a gain. Okay? It depends on what you are following actually. Okay, what is right and wrong, whether you are trying to be moralistic or whether you are trying to follow your ambition. Okay, maybe they won't match sometime. Then what would you do? आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन में चोरी कर लेना चाहिए, ओके, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि चोरी नहीं करके थोड़ा सा अच्छे रास्ते पे चले. So that can also, so this is something very confusing what you want to follow. And relevance of act 1 scene 1 I've already told you. Arousing curiosity. ओके, कि हम लोग ऐसे मतलब सीन देख रहे हैं जहाँ पे फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, ऑपोजिट्स हो रहे हैं.
हमको कंफ्यूज किए जा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि मैकबेथ विल ऑल्सो बी कंफ्यूज, और वेदर, और अच्छा ये लोग मैकबेथ के नाम ले रहे हैं, तो क्या मैकबेथ विल फॉल प्रे टू इट, और मैकबेथ विल लिसन टू हिज हार्ट एंड विल स्टे अवे फ्रॉम देम, creating the powerful atmosphere of evil. So everywhere is dark, there is thunder and lightning. Nature is also sorry for what is going to happen. Or फिर Macbeth is coming and meeting them. What will happen next? And power. The problem is power in man to fight against over ambition. We will see Macbeth's problem is this over ambition. He's over ambitious about himself. Okay. So क्या वो, will he be able to stop him from following the witches, or will he fall prey to it? That is all about the play. And so that's all. We have come to an end to our topic today. So next class again we will continue with it, and do write to me. This is a request. Everybody, after you have followed this, write to me whether you have liked it or not. The first act, first scene. Okay.